तो ये बीच में थोड़ी सी थी छोटी मोटी हंसी बातें, और एक बार फिर से खेल के और जुड़ते हैं, मैदान पर करते हैं। एक अच्छा मैच मैदान पर शुरू होने जा रहा है दो टीमों के बीच में, और देखना होगा कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से भाई सब गोवा एक बेहतरीन जो गुजरात में 10 PL की जो कि टूर्नामेंट वो भी कर चुके हैं सर हरीश काकोड़कर हमारे साथ, और मैं अशोक नाइक, प्रसाद जी परब और प्रशांत आदोड़े, और हमारे स्कोरिंग की जानकारी देने वाले विराज तेंदुलकर और विघ्नेश प्रभु, हम सभी की ओर से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत इस गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स मैदान पर। सांगे प्रीमियर लीग आज चौथा दिन वज्र स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब का आयोजन। Yes, now is the beginning of do or die game here between both the teams. Going for the switch hit and appeal here right from the word go. Well, this is the point that I was mentioning. Going for the switch hit should be a surprise. See, this is the first instance that it has been unsuccessful. If you count the entire chart of the tournament, then you will find almost 60 to 65% switch hits or reverse hits are unsuccessful. But out of that, some have been successful, looked great, looked glorious, and it always attracts the crowd and also the fan following. But also, it can be sometimes creeping up the pressure you as a batter. हरीश सर मैं जरूर जानकारी दूंगा। अब तक के सफर में मेरे कमेंट्री बॉक्स में सनम को पहले गेंद पर छक्का लगाते हुए मैंने बहुत बार देखा है। एक फिर से जोरदार अपील, थोड़ी सिस्टम को ऑफ स्टंप को छोड़ते हुए एक सिंगल के लिए निकले, गले पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, लेग बाइज के साथ एक सिंगल बढ़ गया। तो सनम सालगांवकर को मैंने बहुत बार देखा है जिसने बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाजों के साथ पहली गेंद पर रिवर्स का छक्का लगाया है। Yes, Sanam Sargaonkar is definitely the father of switch hits in Goa because he is the one that he invented. Actually, it was invented by Kevin Peterson, and then everyone started to play that shot. And Kevin Peterson himself didn't know that once he played that shot, this shot is going to be the shot and a new invented shot for the game of cricket. स्क्वायर कट करने की कोशिश, ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और रिव्यू ले चुके हैं। तो हमारे तीसरे अंपायर वो भी कमेंट्री बॉक्स में जुड़ चुके हैं, जो कि tenniscricket.in के स्क्रीन के सामने आप रिप्ले जरूर देख सकते हैं। देखिए किस तरह से दौड़ना शुरू किया आपने बॉलिंग मार पर, ये गेंद ऑफ स्टंप पर, देखिए किस तरह से ये गेंद अंपायर जायदा ले रहे हैं। So umpire is trying to check when the ball is going past the bat, then he wants to check the side angle and then decide. So everyone he is looking at the third umpire at the moment in the com box, having to see the different angles, both the angles, the side angle as well as the straight angle when the ball had gone past. So wide it is. So wide ball. So umpire has to change the decision here at the moment and call it a wide. It has gone after the return crease. Return crease. It had gone past the return crease. That's why it has been called wide. So 2 without loss at the moment. We are just into the second over. This time, this is a very good line. So there is a purposeful intent here from the bowler trying to bowl outside the off stump. And there are two men kept in the deep, one in the deep cow corner region and in backward square leg region. Short ball, this is in the air, this should be a chance. No, going on top of the bowler and also towards the fine leg region for 4 runs. Yeah, slightly streaky, slightly lucky, but the batter is going to take it. आखूट टप्प्याचा चेंडू, हुकचा फटका, शॉर्ट फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक, परंतु संधी नव्हती।
झेल पकडायची संधी नक्की नव्हती आणि चेंडू डोक्यावरनं सीमापार पहिला चौकार बघायला मिळतोय. तो फलंदाजीत नाणेफेक जिंकली, क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय, फलंदाजीला निमंत्रण दिलंय ते मैदानात आणि ते निमंत्रण स्वीकारून पहिल्या षटकात धावफलक पुढे सरकतोय तो. 6 धावा, सलामीची जोडी संग्राम आणि संग्राम सोबत विश्वजित गरुड ही सलामीची बेनीची जोडी. पहिलं षटक गिरीश कोचरेकर. पुन्हा एकदा एका हवेत फटका, यष्टिरक्षकाच्या मागे चेंडू येतोय. एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. So 2 shots you see in the last 2 balls, and see how the batter is lucky. The first ball, the top edge has gone over the top of the fine leg, short fine leg fielder, and the second ball over the keeper and just short of the short third man region fielder. So rub of the green, the luck is favoring the Brave at the moment. This time whacked away, and that's going to be a long 6. That's the first 6 of this do or die encounter between Glorious Sports and S.A. Brahma boys. दोन्ही फलंदाज थोडक्यात बचावतायत, सुदैवी ठरतायत आणि त्यानंतर मात्र एक आखूड टप्प्याचा चेंडू, त्या चेंडूचा खरपूस समाचार घेताना स्क्वेअर लेगला, डीप स्क्वेअर लेगला एक उत्तुंग असा फटका बघा रिप्लेमध्ये. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू, एक सुरेख फटका, मिळतायत 6 धावा. पहिलं षटक आणि या पहिल्या षटकात निघतायत त्या 13 धावा. थोडासा सरते शेवटी महागडा ठरतोय गोलंदाज तो गिरीश कोचरेकर. वैयक्तिक 6 धावावर संग्राम शिंदे आणि एका चौकाराबरोबर विश्वजित गरुड फलंदाजी करतोय तो 5 धावावर. तशेंच जेन्ना हो टुर्नामेंट मुखार व्हरता हांगा खुबश्यो ट्रॉफीज स्पॉन्सर केल्ली आसा. सिल्वर प्लेट मोमेंटो अश्यो ट्रॉफीज, मॅन ऑफ द मॅच फायनल हाका स्पॉन्सर केल्ली आसा. संतिक्षा सुदेश नायक इन द मेमरी ऑफ लविंग ग्रँडमदर लेट नंदिनी सदानंद नायक, बेंडवाडा सांगेम हांणी ही मॅन ऑफ द मॅच म्हणल्यार फायनलीची केल्ली आसा. बेस्ट बॅटर sponsored by Henry Fernandez in the memory of mother late Angelina Fernandez, तारीपंटो सांग्यावेल्यान. तशेंच बेस्ट बॉलर ही स्पॉन्सर केल्ल्या फ्रांसीस मास्कारेनस, पंच विलेज पंचायत नेत्रावळी सांगे. प्लेयर ऑफ द सिरीज स्पॉन्सर्ड बाय वासुदेव गुरव इन लविंग मेमरी म्हणल्यार आपल्या आवयच्या यादस्तिकीन लेट द्रौपदी गुरव यांच्या यादस्तिकीन ही स्पॉन्सर केल्ली आसा. तशेंच सिल्वर ट्रॉफी स्पॉन्सर विद्या नायक, रौनक नायक आणि पार्थ नायक इन मेमरी ऑफ लेट अनुसुया रामनाथ नायक. And once you are giving the trophies in memory of your late beloved mother or grandmother, that's because you know this is the perfect remembrance for them. Cricket is become not only a part of only the players, but also everyone feels cricket is where I can remember my loved ones, give a trophy in their name as big sung in Premier League edition. Smoked it, absolutely smoked it right in the slot. Absolutely exactly where the batter wants. Batter got it in the slot and he just smoked it out of the meat of the blade and over the square leg of mid-wicket region for a good 6. बघा रिप्लेमध्ये बघा एक सुंदर फटका, ओव्हर पिच चेंडू आणि एक लॉफ्टेड फटका, मिळतात 6 धावा. भरपूर बक्षिसांची खैरात. हरिसर विजेत्या उपविजेत्या संघाबरोबर सेमी लुझर मधील पराभूत संघांना सुद्धा या स्पर्धेत बक्षीस, प्रत्येक सामन्यात मॅन ऑफ द मॅचसाठी आणि त्याचबरोबर अनेक इतरही भरपूर बक्षिसांची खैरात अशी ही स्पर्धा 2024 अगदी वर्ष संपता ही स्पर्धा, एक मोठी स्पर्धा या गव्हर्नमेंट कॉम्प्लेक्स मैदानावर आपण बघतोय. आज संध्याकाळच्या सत्रातील या 2 संघादरम्यानचा हा सामना. एक सुरेख षटकार, धावफलक पुढे सरकतोय, स्ट्राईकला सज्ज होतोय तो विश्वजित गरुड. This is in the air. This might be a chance, a difficult take. I'm telling you, difficult one. And this has been taken. Very, very difficult catch. This is going from a short square leg, going back behind. Ball was swirling in the air. And so was the fielder trying to gauge where the ball had gone. Not easiest of the catches, but he has done a good job and taking a clean catch, getting rid of the opening partnership. एक सफल बल्लेबाज, 6 चेंडूत 11 धावा विश्वजित गरुड. आज मैदानात 2-3 सोपे झेल पण सुटताना आपण बघितलेत, पण काही 2-3 अप्रतिम झेल जे टिपले गेलेत आणि त्यातीलच हा एक बघा tenniscricket.in च्या माध्यमातून हा झेल तुमच्यासाठी दाखवला जातोय. अतिशय उलटा पळत एक सुरेख असा झेल टिपला जात. पहिला गडी हा बाद होतोय. एक यापूर्वीच्या सामन्यात जाणे चौफेर फटकेबाजी केली होती, तो एक चौकार एक षटकार
विश्वजित गरुड 11 धावावर वैयक्तिक आणि तो बाद झाल्यानंतर नवीन फलंदाज हा मैदानात सज्ज होतोय तो क्षितिज मोरे. Kshitij More, yeah, at the moment coming at number 3, and he's going to take the strike. So they see the back of Vishwajit, who was looking good. So again, right in the block hole, just outside, going for that back foot drive. And that has been the case at the moment. This has been the length. If you hit this length almost 3 to 4 times in an over, you are going not to be taken for a plenty of runs. You're going to be economical and also create pressure on the minds of the batter. Once again, beautiful length this is, and line as well. So he's backing himself to bowl these wide Yorker length deliveries, which are very effective because he has got a man in the deep covers. Because if he's going to bowl that just wide, anyhow the batter is going to try and slice it or maybe play it in the covers. So very good field placement as well for the bowler. एक मोठा फटका या षटकात त्यानंतर एक गडी बाद करतोय. थोडक्यात बचावतोय फलंदाज, नेम चुकतोय आणि त्याच दरम्यान मात्र एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतात. म्हणजे गोलंदाज मोईन शेख बऱ्यापैकी कमबॅक करतोय. पहिल्याच चेंडूवर घणाघाती फटका निघाल्यानंतर एक गडी बाद करत खेळ समाप्त होतोय तो पॉवर प्लेचा. म्हणजे एकंदरीत दुसऱ्या षटकाचा आणि या 2 षटकानंतर धावफलक सरकलाय तो 20 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. 20 लॉस ऑफ 1 विकेट, 20 धावा एक गडी बाद. 2 फलंदाज एका बाजूने. क्षितिज मोरे फलंदाजी करतोय तो एकेरी धावेवर, तर त्याला साथ देत आहे तो संग्राम शिंदे 6 धावावर बाद झालाय. 11 धावावर विश्वजित गरुड एक चौकार आणि एकेरी धावेने पहिला गडी जो एकंदरीत 19 धावावर. आणि त्यानंतर These are the committee members of Sangam Premier League 2024-25 on the screens there. The president Chandradeep Nair, Secretary Chandras Patil, Treasurer Uday Naik, Vice President Sudesh Naik, Joint Secretary Mayur Naik, and Joint Treasurer Santosh Naik, along with the members, other members of the Sangam Premier League 24-25 edition that you can see on the screens as well. Very nicely covered. Entire sponsorship has been, and entire sponsors have been covered very well here by Tennis Cricket in this live coverage. Wonderful to see that most of the people from Sangam have given their hand to this wonderful trophy. Because it is not about just about the cricket being played here. The name of Sangam also attached to Sangam Premier League. So local people also understand this is a big stage that has been given by the organizers, Vajra Sports and Cultural Club, and they understand that their names and also the sponsors are going to reach across the globe through the medium of Vajra Sports and Cultural Club and Sangam Premier League 24-25 edition, where it is being watched and telecasted almost everywhere in all parts of India. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. त्यानंतर गोलंदाजीत बदल झालाय. रोहिताला पहिल्या चेंडूवर 2 धावा, त्यानंतर निर्धाव चेंडू, धावफलक पोहोचतोय तो 22 धावावर. एक गडी बाद 22. षटक क्रमांक 3. गोलंदाज रोहित खरंच आपल्या बॉलिंग मार्कवर सज्ज होतोय आणि समोर मात्र स्ट्राईकला क्षितिज मोरे त्याच्या गोलंदाजीचा सामना करतोय. ओव्हरपेच चेंडू, एक लॉफ्टेड फटका, डीप लॉंग ऑनला चेंडू, बराच वेळ हवेत सुटलेला झेल, चेंडू बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं, परंतु सरते शेवटी अगदी शेवटच्या क्षणी चेंडू अडवला जातोय आणि त्या दरम्यान मात्र एक धाव दोन्ही फलंदाज हे पूर्ण करतायत. एक ओव्हरपेच चेंडू, एक मोठा फटका, लॉफ्टेड फटका, डीप लॉंग ऑनला चेंडू, बराच वेळ हवेत. आज मगाशी मी उल्लेख केला की काही झेल सुटलेत आज मैदानात, काही अवघड झेल टिपले गेलेत. हा झेल नक्की संधी होती चित्रक्षकाला हरीश सर. Yes, and it was not far away. The fielder was almost close, came hard, should have taken it. Going for the reverse once again. And he should always pick up the right ball to go for the switch hit. What is your opinion, Ashok sir? Most of the times I feel the switch hit that has been played by most of the batters is premeditated. They are almost in the mind that I'm going to hit a switch hit of this particular ball, wherever the ball is.
Sometimes many of the batters try to do it to create pressure in the minds of the captain and the bowlers, but someone just want to open the field sometimes. Maybe if there is a point region fielder inside and you try to hit it over it, the point region fielder goes back, and then you get one more from the leg side inside the 30-yard circles. The pressure want to be created by the shot. This is India. This should be a chance. There is a man. They are saying yes, it's mine, and both of them drop it. Oh, this is a total harakiri here by both the fielders. This was not an easy catch. We have already seen a catch drop down at the long on region, and one more absolutely total miscommunication here. Total miscommunication by both the fielders, and that means the batter still stays on the crease. अरे सर, मैदान पर हम हमेशा कमेंट्री बॉक्स में जरूर तीन बातें करते हैं, एस, नो, वेट, और ये फील्डिंग के साथ हमेशा होनी चाहिए. वो नहीं हुई मैदान पर, और इस ओव्हर में 2 कॅच छुटे, 2 झेल सुटलेत. मगाशा सामन्यात एक झेल सुटला, भरपूर महागडा ठरला. बघूयात ते या सामन्यात काय घडतंय ते. एकंदरीत खेळ समाप्त होतोय तो निम्म्या षटकांचा, म्हणजे 3 षटकं समाप्त झालीत आणि या 3 षटकानंतर धावफलक पोहोचलाय तो 25 एका गड्याच्या मोबदल्यात. या पहिल्या इनिंगच्या ब्रेकमध्ये नक्की उद्याच्या सामन्याविषयी लॉट्स टाकले जातील. उद्या 4 संघ, गोवा पोलीस क्रिकेट संघ खेळतो, बँगलोर ग्लॅडिएटर्स हा संघ उद्या खेळतो, रुपेश 11 बेतुल हाही संघ खेळतो, आणि सर MS धोनी हा संघ खेळतो. म्हणजे उद्या एकंदरीत 4 संघ सहभागी होत आहेत. गोवा पोलीस संघ जो एक दर्जेदार अष्टपैलू खेळाडूंचा भरणा असलेला संघ, या संघाकडे पण भरपूर प्रेक्षकांच्या नजरा असतील. या संघाकडे, गोवा पोलीस क्रिकेट संघाकडे. हरीश सर, I personally feel tomorrow is going to be the toughest of the groups, because you're expecting many of the top players, not only for Goa. MS Dhoni also is expected to get a lot of top players from India to play that first side. And you have to get, because Goa Police is also a strong side, one of the strongest in Goa. So that group is going to be the group of death, I can call. And you got to play really hard. You got to take the catches to enter into the quarter league stages. So all at stake. Many viewers are going to come on this ground, especially on Friday, Saturday and Sunday, to watch those games. गोलंदाजीत बदल झालाय. मोहीन शेख सज्ज होतोय. ऑप्टमच्या बाहेर चेंडू सोडून दिला जातोय, बॅट दूर करतोय, यष्टिरक्षक बाकीचं काम पूर्ण करतोय. षटक क्रमांक वैयक्तिक दुसरं, संघाकडून 4थं धावफलक पोचलाय तो एकंदरीत 26 एका गड्याच्या मोबदल्यात. आणि पंचांचा इशारा होतोय की या चेंडूसाठी तिसऱ्या पंचांकडे दात मागितली जाते. पंच इशारा करतायत की हा चेंडू स्वैर की योग्य होता. Fair delivery. Just because the back leg has shuffled, and he left the ball after taking the back leg shuffle. That's the reason why the guideline also shuffles a bit. Very good decision from the third umpire. एक रत्नागिरीहून, एक मालवण तारकर्ली, आणि तिसरे पंच हे मुंबईतून. ऑप्टमच्या भरपूर बाहेर चेंडू, आणि हरीश सर गेले कित्येक वर्ष सातत्याने आणखी पण एक 4 ते 5 पंचांचा उल्लेख हा करावा लागेल, ज्यांनी सुंदर कामगिरी या स्पर्धेत केली. परंतु यावेळी मात्र कामामुळे सुट्टी न मिळाल्यामुळे त्यांना सहभागी होता आलं नाही. राजेंद्र दाभोलकर, अभिजित तळेकर, अमेय नाईक, सिद्धेश गाडी आणि सर सुजित राणे. Cracking shot. What a shot. Spectacular indeed. Definitely there was width given here, room given here, but how stylishly he has played that shot. Very elegant, sir. फास्ट क्रिकेटमध्ये खूप दुर्मिळ झालेत हे फटके, आणि तोच एक देखणा सुंदर असा फटका बघायला मिळतोय फलंदाजाच्या बॅटमधून, आणि मिळत आहे 4 धावा. धावफलक पोहोचतोय तो 31 एका गड्याच्या मोबदल्यात. This time wanted to go across. Whenever he tried to play, if you see that previous shot, that means he has got shots on the offside as well. And sometimes you just try to back yourself. You feel that yes, leg side is more favorable side, and we can go on the leg side for those sixes. When you have got shots on both sides, you should try and prefer playing the shots in the covers and the point as well. This is in the air.
should not reach towards the fielder. The fielder has come all the way from square leg towards the backward square leg region, and a pretty good throw as well, straight into the hands of the keeper. That's the kind of fielding that is required. It's a do or die game, and do or die game, you expected a better fielding effort. They have dropped two sitters, I would say sitters, because the fielders were into the position to take the catch, and as professional outfit as these players are, they should have taken those. खूप महत्वाची लढत, एक अटीतटीची महत्वाची लढत या दोन संघादरम्यान. ऑप्टम्परचा चेंडू सोडून दिला जातोय, बाकीचं काम यष्टीरक्षक करतोय. खूप महत्वाची लढत झाली सर अशासाठी की एका संघाला थांबावं लागेल, खूप निराश होऊन या स्पर्धेतून निघावं लागेल, आणि एका संघाला परवा शनिवारी या मैदानात पुन्हा यावं लागेल, परंतु दुसऱ्या संघाला, पराभूत संघाला 2025 डिसेंबरमध्ये वाट बघावी लागेल. त्यामुळे ही दोन्ही संघांसाठी महत्त्वाची लढत. प्रत्येक खेळाडूला अगदी जीव ओतून कामगिरी ही करावी लागेल. सांगता होते ती चौथ्या षटकाची 8 धावा प्रति षटकामागे जमवत 32 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात 4 षटकांचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर. And also, after having discussed about not being a part, if you don't win here, you are going out, and once again you are getting a chance is 25. And you never know what is going to happen in 1 year. Sometimes you might lose the form, you might lose the plot, and might various things might come in your life. So here is the opportunity to grab with both hands and seize this, because you are here at the moment, and it's always about the present moment. You have to think and perform and excel, because the future, nobody knows about the future, because future is way far ahead from our reach. So perform in the present, excel, and showcase the talent that you have, because the hard work that you have done in the entire career, this is the moment that you have to lift yourself. Oh, wow. Absolutely wow shot. A back off length. I can understand the pace was not there, but the way and stylish and elegant stuff that he's showing at the moment, Sangram Shinde, he's not measuring it in grams at the moment. He's measuring it in kilos. आप रिप्ले पर जरूर देख सकते हैं, तो थोड़ी सी छोटी गेंद मिली और बैकफुट पर पुल किया इस बार बड़ी खूबसूरती के साथ, और स्कोर आगे बढ़ा 6 रन के साथ 38 रनों पर. अल्टी पल्टी की कोशिश, ऑफ स्टंप से दूर गेंद, अंपायर ने बाएं फैला दी, वाइड बॉल का इशारा, और इस वाइड बॉल के साथ एक अतिरिक्त सिंगल और बढ़ गया स्कोर के खाते में. 39 रन पर टोटल पहुंचा. एक बहुत ही अच्छा मैच मैदान पर शाम के दौर में इन दो टीमों के बीच में. That should be wide as well. That should be wide as well. He's trying to be away from the reach of the batter, and once you try to be away and too far, that gives an opportunity to raise both the arms for the umpire to call it a wide, and that's exactly what has happened over there. Rohit Kharat just bowled one ball so far, and he wants to be away from the reach. Sangram looking dangerous and threatening for the bowlers. They certainly don't know where exactly to bowl to him. They got 3 men on the deep and 2 men on the deep on the offside as well. Now switching the positions of the fielders. 1 man for the switch it as well. It's very difficult customer to bowl to, and that's the reason why that thing is playing in the minds of the bowler, bowling from over the wicket. That's very well bowled. Very well bowled. This time also it was slightly away from the reach, but well within the guideline. So that is a certain ploy here. Certain ploy here from the batter to just get these leg cutters going, but away from his hitting range. अरे सर देखिए, दर्शकों में देखिए, ये गेंद निकली थी जो छक्के के लिए, तो दर्शक ने एक हाथ से उस गेंद को कैच किया था. क्या कैमरा वर्क है tenniscricket.in से, दात देनी पड़ेगी बिल्कुल. इसी बीच स्केल 40 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर, 1 विकेट पर. बॉलिंग बार पर रोहित खरात गेंदबाजी करते, खेल जारी है 5वें ओवर का, और देखना होगा कितने रन जो कि स्कोर बोर्ड पर बना देती है बल्लेबाजी में ये टीम. This is good bowling here, and if you see the replay, this replay as well as the previous replay, then the previous replay was slightly loopy ball. He has given it a lot of revolutions to get the ball slow in the air, but here slightly pacey, and it cut in sharp away from the right hander. He is mixing it up well at the moment with in terms of his pace. This was right in the slot, and next to the parking lot. That's exactly what he asked, and that's exactly what he has been gifted here. The one ball in the slot, an error here from the bowler, and Sangram is saying, bowl me over there, and I can hit you all day long, all night long.
Sangrang looks to be at the moment in a top form. थोड़ा सा गति में परिवर्तन किया था स्लोअर वन, लेकिन बहुत जल्दी पिक किया और ओवर पेज गेंद मिली और बेहतरीन टाइमिंग इस बार। 6 रन मिल गए स्कोर के खाते में, एक लंबा छक्का और इन 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ा 46 रन 1 विकेट के नुकसान पर। As somehow I feel, Ashok sir, they still need few more. Somewhere around maybe 65 is going to be the first target in the mind. 65, if you have got good bowling department, this is going to be a good match in the second innings. अल्टी पल्टी की कोशिश इस बार नाकामयाब रहे और गेंद निकली विकेट कीपर के बाते में। सर बिल्कुल 60, 62, 65 का टोटल एक अच्छा टोटल होगा मैच में, क्योंकि निर्णायक मुकाबला है इस मैदान पर। टॉस जीता This time our well wishers आमचे बरे मागपी ज्या सगळ्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा, सगळे सांगेकार आनी लागींच्या वाठारांतले जाणी सगळे आमकां हातभार लायिल्लो आसा, तांकां मनकाळजांतल्यान उपकार आटयता। आनी ज्या तरेन ह्या स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटात जे आमचे स्पॉन्सर्स जे आसात जाणी आमकां हातभार लायिल्लो आसा, ते आज जेणे करून हो टुर्नामेंट सांगें प्रिमियर लीग मोठ्या दबाज्यान फुडें वता। हांच्या सगळ्यांचो तुमकां फोटोज जे आसा ते स्क्रिनीचेर दिश्टी पडटात। जे सिल्वर ट्रॉफी स्पॉन्सर विद्या नायक, रौनक नायक आनी पार्थ जे स्क्रिनीचेर तुमकां दिश्टी पडटात, अशे वेगवेगळे स्पॉन्सर्स आमी वेगवेगळ्या टायमार तुमकां हांगा दाखयतले, जेणे करून हो जो प्रिमियर लीग आसा तो मोठ्या दबाज्यान मोठ्या उत्साहान फुडें व्हरता। कितलींशीं वर्सां जालीं सांगेकाराचो हात हांगा लाभिल्लो आसा। फ्रांसिस्को मास्कारेनस बाब बेस्ट बॉलर, बेस्ट बॅटर हेनरी फर्नांडीस, संतीक्षा नायक प्लेयर ऑफ द फायनल एंड मॅन ऑफ द सिरीज वासू गुरव जो कुडचड्या वयल्यान आसा, ताणें हांगा स्पॉन्सरशीप दिल्ली आसा। A big appeal there from the bowler. He thought that it had hit his toes rather than hitting his bat, but umpire saying it has hit the bat first and never hit the toes. So certainly bat first and a single given here to the batter. बॉलिंग में परिवर्तन अमोल आ चुके। गेंदबाजी पर एक अच्छी शुरुआत गेंदबाजी में, बल्ले से लगी, बाद में पैरों पे लगी, बच गया। वहां पर एक सिंगल जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट इस बार, डीप मिड विकेट सीमारेखा से बाहर, एक लाजवाब शॉट, गेंद चली गई सीमारेखा से बाहर, सिक्सर 6 रन के लिए। देखिए आप रिप्ले में देख सकते किस तरह से ये शॉट, बहुत बेहतरीन टाइमिंग, एक लंबा शॉट, एक दूर का छक्का और स्कोर बड़ी तेजी के साथ 50 रन से आगे निकली, 53 पर पहुंचता हुआ 53, लॉस ऑफ 1 विकेट। Slowly and steadily that they are reaching towards their goal, reaching towards the target, what they are eyeing for at the moment, 53. So another big hit and they will certainly fancy the chances moving towards that 65. So in cricket, you should never be thinking early. You should be thinking how we are going to prosper in the present moment. Take every over, and every over you have to count to a better total. He have missed on an opportunity, missed on a sixer there. Yes, Sangram will be thinking, how did I miss that? That was like an ice cream given at the moment here in scorching sun, and he's saying, I don't want the ice cream. Here is the Supremo sixer ball that has been used here in this competition. Sixer Supremo, you can see wonderful fur and wonderful rubber as well, and that's why it is lasting long as well, and also it is being handy for the bowlers as well as the batters and getting a lot of good returns. एक लोअर फुल टॉस मौका जरूर था बड़े शॉट के लिए, लेकिन मौका नहीं मिला। इस बार हवा में मार बैठे, क्या अपने पॉलिथ्रो में गेंद के नीचे विकेट कीपर, लेकिन उससे पहले अपने पॉलिथ्रो में अमोल आते गेंद को लपेटते अपने हाथों में और दूसरी सफलता मिलती हुई SA ब्रह्मा बॉयज काले चौकी क्रिकेट टीम को एक विकेट का पतन होता हुआ ग्लोरियस स्पोर्ट क्रिकेट टीम का, और नए बल्लेबाज मैदान पर निकलते हुए बल्लेबाजी के लिए। आखिरी ओवर का खेल जारी है और अपा काशिद जो बिल्कुल जाने जाते हैं स्लॉग ओवर में आखिरी पल में बड़े शॉट के लिए, और वो आ रहे मैदान पर। क्या हरीशर 62-65 के आसपास जाएगी ये टीम, देखना होगा। आने वाली गेंद पर बहुत ही शानदार कैमरा वर्क tenniscricket.in से दात उनको भी पूरी देनी पड़ेगी। Yes, absolutely. Tennis Cricket has covered because they have got the best cameraman here in Goa.
Gaurav and Santosh Nanikara as somehow got the best team, and they are working well as a cohesive unit to get this best coverage and serene coverage here as well on tennis cricket. 53 for 2 at the moment. In comes Apa Kashid, who had played an impactful innings in the previous game, and he'll be on strike at the moment. They need at least 10 runs the next two balls, but they're getting just a single now down towards the third man region. Pretty good comeback here, I must say, from the bowler Amol, who was hit for a six of the second ball, and Sangram was looking at that point of time. But having said, he has come back strongly in the next three balls, getting rid of Sangram as well as just conceding 8 runs in the over so far. अपने बॉलिंग मार पर इस ओवर की अगली गेंद लेकर बहुत अच्छी गेंद इस बार हरकत करते हुए मिडिल स्टंप से ऑफ स्टंप की तरफ। हम हरीश सर गोवा लाइव की चर्चा करेंगे, फोटोसेनिक की चर्चा करेंगे और उसी के साथ AB25 भरत अर्कस बहुत आजकल अच्छी तरक्की कर रहे हैं, अच्छा कैमरा वर्क वो भी बिल्कुल कर रहे हैं, और गोवा लाइव कास्ट जो इनकी भी प्रशंसा जरूर करनी पड़ेगी। तो चलिए कल के मैच के लिए जानकारी हम जरूर देंगे। लॉट्स निकाले जाएंगे। रुपेश 11 बैतूल, गोवा पुलिस क्रिकेट टीम, बेंगलुरु ग्लाइडेटर्स और MS धोनी, ये चार टीम। लेकिन उससे पहले जो कि देखते हैं बल्लेबाजी किस तरह से हुई। Here is a summary of the scorecard where the innings has been scored. Bulk of the score has been scored by Sangram Shinde, 30 of just 19 balls. Vishwajit Garu, 11 of 6. And Kshitij More, you can see, has faced 10 balls for just his 7. That is the time when you expected the bowler, once you play 5 balls, you expected a strike rate of at least maybe 200. But that was not the case. And that's the reason why it is just a scorecard of 54 runs. And a wicket here for Mohin Sheikh and Amol Khangne. Whereas 2 overs have been bowled by Moin Sheikh for just 14, and Rohit Kharat bowled 2 overs for 19. Pretty economical as far as the tennis cricket is concerned. Economy of 7, 9 and or maybe 8 is considered decent enough. So 54 is what they have managed to get, and extras is just 5 in this entire innings of SA Brahma Boys Kala Chowki. And there's the reason why Glorious Sports have posted 54. 55 runs required for SA Brahma Boys to win and enter into the quarter league stages of this Sangam Premier League edition. वेलकम बॅक सर्व खेळाडूंचं आणि प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे। आपण बघतोय सांघी प्रीमियर लीग 2024 क्रिकेटचा महासंग्राम आणि 25 पर्व या संपूर्ण स्पर्धेला झालेली आहेत। एका बाजूला क्रिसमस आहे, परंतु आता प्रत्येक दिवशी येणारा मॅच रोमहर्षक आपल्याला बघायला मिळतोय। उद्या तारीख आहे 27/27 आणि 27/12/2024। उद्या त्या दिवशी कोणते 4 संघ खेळणार आहेत, कोणता संघ कोणाविरुद्ध खेळणार आहे ते देखील आपण पाहणार आहोत। आणि या 4 चिठ्ठ्या आता माझ्याबरोबर आहेत, प्रसाद आमच्याबरोबर आहेत। ड्रॉ केला जातो आहे पहिला सामना, बरोबर 9 वाजता सामना सुरू होईल आणि पहिले 2 संघ कोणते असतील ते देखील पाहूया। रुपेश 11 बैतूल आपण पाहू शकता, ही चिठ्ठी आपल्याबरोबर आहे। रुपेश 11 बैतूल आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असेल बँगलोर ग्लॅडिएटर। हा पहिला सामना बरोबर 9 वाजता उद्या सुरू होणार आहे। स्पर्धेचा अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे उद्या। आणि दुसऱ्या सामन्यामध्ये MS धोनीचा संघ असेल। MS धोनी आपण पाहू शकता, MS धोनीचा संघ त्यांच्या विरुद्ध असणार आहे गोवा पोलीस असे 4 संघ एकमेकांविरुद्ध असतील। आता तुमच्या समोर सामने पुन्हा एकदा मी सांगतो, पहिला सामना असणार आहे इथे रुपेश 11 बैतूल। यापूर्वी हा संघ खेळलेला, खूप चांगली कामगिरी त्यांनी केली रुपेश 11 बैतूल, आणि त्यांच्या विरुद्ध संघ असणार आहे बैंगलोर ग्लैडिएटर। तर हा पहला सामना पुनः एकदा मी खिलाड़ियों सांगेन, मैं एक बार फिर सभी दर्शकों को और खिलाड़ियों को विनती करूँ, खास करके खिलाड़ियों को विनती करूँगा, आपको 9 बजे ये टूर्नामेंट शुरू करने के लिए यहाँ आना है और पहला बॉल यहाँ डिलीवर होना चाहिए। तो पहला मैच ग्लैडिएटर आप तैयार है और उसके साथ रुपेश 11 बैतूल। सेकेंड मैच जो होगा बिल्कुल आपके स्क्रीन पर है, गोवा पुलिस और उनके सामने टीम होगी MS धोनी। गोवा पुलिस MS धोनी की टीम, यह दूसरा मुकाबला है।
आणखीन एक महत्त्वाचा मॅच मैदानात सुरू आहे त्या दिशेने जाऊया जिथे आता आमच्याबरोबर काकोडकर सर आणि त्याचबरोबर अशोक नाईक सज्जत. ओव्हर टू कॉम्बॉक्स. So we are all set for the second innings here for this game, and having the situation in hand at the moment, just around close to 9 runs per over required is the asking run rate. 9 is not a huge one, but if you've got the bowlers in hand who can start well and start picking up wickets in the early stages, it's going to be a great game to watch. Opportunity here for both the teams to make it into the quarter league stages, where some of the top teams have already entered. We have seen two teams playing and reaching into the semi-finals, and it was actually a bowl out between those teams. Tirupati Savade and Amazing Asolna of Goa have entered into the semi-finals, whereas Dharsaka Stars earlier in the morning and the middle session has entered in the quarter league stages. So Dharsaka Stars is the first team today to enter into the quarter league stages, and we are still awaiting for the second team to go into that quarter league stages that is going to be played on Saturday. संदेश कॅमेरामॅन प्लीज आपण प्रेझेंटेशन बॉक्सच्या दिशेने यायचं. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार दिला जाणार आहे आणि यानंतर अत्यंत महत्त्वाचा सामना मैदानात सुरू आहे. पुन्हा एकदा जाऊया हरीश काकोडकर कॉम्बॉक्समध्ये. This time hit it in the air and a safe shot, clearing his front leg and hitting it at the long on region, and a boundary to begin the proceedings here for the team SA Brahma Boys, Khala Chowki. मंदार गुरव आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये यायचं आपला पुरस्कार घेण्याकरता. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार विजयाचा शिल्पकार. तोपर्यंत आपण हरीजी तुमच्यापर्यंत या एका ओव्हर म्हणजे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार देणार आहोत. So Nagesh Wadekar has begun his innings, and he was looking very dangerous. I've seen is one of the innings that he's got a lot of range and a lot of clarity in his thought process, and is the process that is very much required. You should be clear in your mindset what I'm doing and what is my strength, and play according to the strength and the merit of the ball. You are definitely going to get pretty high scores, just like Nagesh had gone in the previous game. So good start here for the batting side, SA Brahma Boys. Oh, lovely square cut, lovely square cut. There is nothing wrong, absolutely nothing wrong with the ball. He has bowled a back of length. There was not too much of width given, but look at the strength and look at the power from the front foot, transferring the weight onto the back foot and then slashing it towards the backward point for a magnificent boundary. That's exactly what raises the confidence. Two boundaries we have seen, one straight down the ground and one in the square region on the offside, and both are really one of the classy shots that we have seen. And this is gone for six. Gone for six, and top of that, a no ball. And now we are going to see the live coverage from the presentation ceremony where Player of the Match award is being given. शुक्रिया हरीश जी. फिलहाल मंदार ने दमदार प्रदर्शन किया था, मैन ऑफ द मैच के हकदार बने हैं, और प्रदीप जी हमारे साथ हैं. उनके करकमरद से ये खूबसूरत ट्रॉफी और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको दिया जा रहा है. मंदार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. एक बार फिर मैच में अच्छा प्रदर्शन, फॉर्म में वापस आना बहुत ज़रूरी था. चेहरे पर मुस्कुराहट है और मैदान के अंदर क्लासिकल बल्लेबाज भी चल रही है. तो मंदार इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, गेम चेंजर खिलाड़ी, और प्रदीप जी के करकमरद से खूबसूरत ट्रॉफी हम दे रहे हैं इनको. सांगे प्रीमियर लीग 2024 में मंदार का ज़बरदस्त प्रदर्शन, गेम चेंजर खिलाड़ी है. तो मंदार, वेल डन. ओवर टू कॉम्बॉक्स. We have to see these now. So see the crease here, whether it is overstepping or not. Yes, no ball called. So the umpire decision stays here. Very good umpiring. Umpire decision stays. The line belongs to the umpire, and that's the right signal that has been made from the third umpire.
So once again, this is a big start. This time nicely played into the that point extra cover region. Once again, should be getting a couple of runs. Misfields happening here in the Glorious Sports. The way SA Brahma boys have started this innings in a really torrential manner. It is boundary 6, and if you can see when Virat Tendulkar is writing a boundary and 6, it is about using the red pen. And when there are too many red pens, you can expect the scoring chart is always in a blockbuster note. एक अच्छी शुरुआत मैच में 17 रन बिना किसी नुकसान से अगली गेंद इसी बीच में बैकफुट पर स्लाइस किया इस बार बड़े खूबसूरती के साथ डीप कवर पॉइंट बाउंड्री पर एक लाजवाब शॉट गेंद निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए. Sir, this is one of the very difficult shots. See the extension of the arm, giving himself room on the leg side and extending it fully to get it over the extra covers and more towards the covers region. Fabulous shot making. What range of shots and what are the arc of this man is certainly showcasing the talent within and unleashing here at Sangam Premier League. One of the prolific hitting abilities that we have seen both on the onside as well as a classic shot making on the offside. This time it is straight down the ground over the head of the mid-off fielder and getting one more boundary. Sir, it is all about the boundaries and sixes at the moment, and it's a bloodbath here, bloodbath created by the batters against the bowlers. क्या शुरुआत किया मैदान पर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया आगे निकले और मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से कोई बिल्कुल मौका नहीं था फील्डर के लिए गेंद निकली 4 रन के लिए एक आक्रामक शुरुआत इस टारगेट के साथ स्कोर हो चुका है 25 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर. Well, I think Nagesh Wadekar must have seen the kittle of the tea. Tea was brought here. It was for the organizers. Maybe he wants an early tea here, and that's why he's thinking the tea is for me as well. I'm going to finish it off and take my tea as early as possible because the way he's going at the moment, he's in a furious form. 55 का टारगेट टोटल और उस 55 के टारगेट के सामने पहली ओवर में लगभग आधे स्कोर के आसपास टीम निकलते हुए इसी बीच अगली गेंद सामने से दूर वाले चोर से अपने बॉलिंग बार पर दौड़ते हुए अच्छी गेंद ढीले हाथों से खेला गैप में खेला इस बार कवर की तरफ डीप एक्स्ट्रा कवर पर बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते लेकिन तब तक एक सिंगल आराम के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने. पहला ओवर समाप्त हुआ जो महंगा रहा गेंदबाजी में और इस पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 26 रन बिना किसी नुकसान से. Well, Nagesh, certainly, I don't know who has beaten him today. The way he is hitting at the moment, he is actually at the moment transferring his bites to the bowlers. And it is almost 26 runs. It is 26 runs scored in the first over, and the target is just 55 runs. So, one over only, I think the damage has already been done. बिल्कुल लगभग आधे स्कोर की और बढ़ चुकी है. 4 चौके लगाए एक छक्का लगाया नागेश ने इस पहले ओवर में. सिद्धेश भोसले को मौका नहीं मिला है और देखना होगा ये दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है. कमेंट्री बॉक्स के ओर से वो गेंदबाजी में परिवर्तन और दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के लिए आ चुके हैं बरकत शेख. देखना होगा मैच में वापसी करनी है तो इस ओवर में एक अच्छे ओवर के साथ 1-2 विकेट लेने पड़ेंगे नहीं तो और अगर 2-3 शॉट बड़े बन गए इस ओवर में तो मैच थोड़ा सा आसान हो जाएगा. Wow, what a shot. It has just raced onto the fence. He's going the reverse way. He's going and he's trying everything at the moment and everything is hitting the middle of the bat. Well, he's detonating the bowling of Glorious Sports at the moment. They have no answer to this batting masterclass. And looking at the way he's prospering at the moment, I think we are definitely going to have an early outing at home. खेला गेंद कौन साइड पर मिस फील्डिंग मिडॉन पर मिस फील्डिंग और गेंद चले गई लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर 4 रन के लिए चले गई बाउंड्री लाइन से बाहर. अरे सर जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है क्या मैच कहां पर जो ये समाप्त होगा. Sir, they have already lost it in the mind. The Glorious Sports have already lost it in the mind and now they are thinking about going back home and thinking about the memories and the family and the friends together in the minds. 36 रन टोटल स्कोर. ऑन साइड पर एक स्लॉग से मिड विकेट बाउंड्री पर
अंपायर थोड़ा ज्यादा ले रहे 4 या 6 का, और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन को पार करते हुए 4 रन के लिए पहले। Sir, this is the first time that I'm witnessing. It is 40 runs are on the board that has been posted, and out of that, 39 runs has been scored by the single batsman. The non-striker is still there. He's just there for a photo shoot. बिल्कुल, अब तक नॉन स्ट्राइकर पर सिद्धेश भोसले को मौका बिल्कुल। इस बार फिर से उड़ाया गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे, और पहली सफलता मिलती हुई मैदान पर संग्राम। Sangram Shinde is back to the pavilion, and it has been taken in the deep. But I think he has already played a massive innings here. Massive to take his team well into the quarter league stages. It's just a matter of moments now. Few moments and you are going to see and witness this team of S.A. Brahma Boys Kalachoki heading into the quarter league stages after a wonderful performance from Dhar Sakar Stars, who are the first team in this group to enter into the quarter league stages. 39 रन बनाए नागेश वाडकर ने और अच्छी शुरुआत की अपने टीम के लिए, और उनके आउट होने के बाद नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए किशन देवेंद्र यादगार रहा था उनका कैच आनंदवाड़ी चैंपियंस ट्रॉफी में। कौन बोलेगा वो कैच। आड़े बल्ले से इस बार स्वीप किया गेंद को मिड विकेट बाउंड्री पर लंबी दौड़ लगाई, लेकिन गेंद उनसे पहले निकली बाउंड्री लाइन को पार करते हुए। आते आते चौके के साथ शुरुआत करते हुए मैदान पर, और चौके के साथ स्कोर आगे निकला 44 रनों पर। And at the moment, you can see Siddesh Bhosle actually is pleading for his partners to give me strike. He's just watching from the non-striker's end, and finally a single has been given. But Siddesh, I'm sorry, this was the last ball of the second over. And that is going to be the end of 2 overs. And Siddesh once again has to stay at the non-striker's end. So it's the end of 2 overs, 45 for 1. And it is a top-class batting here from Nagesh Wadekar. But Siddesh is still not been given strike by his partners. Siddesh, many happy returns of the day. Siddesh is having a birthday, so his friends are not tiring him, telling him to please take your rest, and we need to have a lot of hard work done at the night time when we are going to celebrate. So you don't do the hard work. Hard work will be done by us. बिल्कुल, ढेर सारी शुभकामनाएं, जन्मदिन मुबारक हो सिद्धेश, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन पर। और मैच अब आ चुका है हरीश सर, 24 गेंदे और 10 रन मैच को जीतने के लिए। सर क्या है, मतलब आपके बर्थडे के दिन भी आपको एक बॉल भी खेलने को नसीब नहीं आ रहा है। मतलब आप जा रहे हैं अब खेलने के लिए, लेकिन एक बॉल भी अभी उनको मिला नहीं है खेलने के लिए। क्या बर्थडे है। He will remember it for a long time in his lifetime. And if the batter Kishan Devendra is going to finish it off with the boundary and the 6, he's just going to come out staying at the non-striker end for most of the time. This has been whacked there. There's a fielder in the deep and goes for 4 runs. Goes for 4 runs. And Siddesh has to do just one job of clapping from the non-striker's end. He just started clapping from the first ball to Nagesh, and he's clapping at the moment to Kishan. दूसरा चौका 9 पर खुद के व्यक्तिगत, लेकिन हरीश सर एक मौका सिद्धेश को देना ही चाहिए एक शॉट के लिए। आज जन्मदिन है तो एक शॉट उनके लिए, उनको मौका देना ही चाहिए। Maybe he will get a chance for his shot at the night. So he's certainly not getting a chance during the day, but he might get a chance later on. 5 runs away, 1 shot away here. They're actually enjoying at the moment, having a wonderful time. The Red Devils, you can call them. S.A. Brahma Boys Kala Chowki. And finally, Siddesh is getting the strike. Please give a big round of applause. जोरदार चालियां होनी चाहिए यहाँ पे सिद्धेश के लिए। क्या बड़े शॉट के साथ ये मैच समाप्त करना पसंद करेंगे? आने वाली गेंद पर देखा जाएगा, लेकिन स्ट्राइक तो मिल चुका है जो होना चाहिए था। सिद्धेश भोसले, एक बार फिर से जन्मदिन मुबारक हो आपके लिए। और सामने अपने बॉलिंग बार पर राहुल इस ओवर को आगे बढ़ाते हुए।
अच्छा शॉट ऑन द राइट, थोड़ा सा खेला मिड विकेट पर, फील्डर लंबी दौड़ लगाई, गेंद उनसे पहले ही चली गई मिड विकेट बाउंड्री पर 4 रन के लिए, और इस चौके के साथ इस मैच को समाप्त करते हुए। So both the matches for SA Brahma boys victory has been finished by Siddesh, and once again everyone congratulating both the batters as well as a prolific performance from the top order. The opening batter Nagesh Wadekar, he had just exploded on this arena and finished the game before it had started. It was a quick fire 39 from just 11 balls, and he has smoked it out of the meat, and just this entire bowling unit has been absolutely detonated here by this bowler. Certainly a sparkling performance by this team to enter into the quarter league stages. Congratulations to SA Brahma boys Kala Chowki, but commiserations to the losing side, Glorious Sports. You have played a very good part in the first game beating Rahul 11, but in the end you lost the 2 games, and you got to lose out for your opportunity going into the quarter league encounter. And here is the entire scorecard. 54 for 2 is what we have said. Sangram Shinde posted 30. That was only the highlight of the batting innings. And in the end, while chasing Nagesh Wadekar, look at that score. 39 of just 11 balls. And that has just cleaned the stuff of the bowlers of Glorious Sports. Nothing to showcase as far as bowling. A wicket only for Barkat Sheikh. But it was an entire consolidated and competitive effort here from the entire team of SA Brahma boys Kala Chowki. And now we certainly know which are the 2 teams that head into the quarter league stages, and we certainly know which are the 2 teams going 4 teams in fact going to play tomorrow. I'll take the names once again. Rupesh 11, MS Dhoni, Bangalore Gladiators and Goa Police. So Goa Police, Bangalore Gladiators, Rupesh 11 and MS Dhoni. These are the 4 teams, and I'm telling you, all the viewers and listeners, rest assured that some of the top players of all India are going to play, and also Goa Police, certainly everyone knows it is one of the strongest outfit. So it's going to be a great encounter tomorrow on a wonderful Friday from morning to evening. And now we are going to present our last player of the game award to Nagesh. So Nagesh kindly requested to come at the presentation arena and kindly come up here and pick up the player of the match award. Meanwhile, it is bye from Harish Kakodkar for the day, and I'll see you tomorrow morning. So it's bye from me. See you for the day 5 of Sangam Premier League, and good night to all of you. Before we head on to the presentation ceremony with Prashant Adavde, who is going to lead the presentation ceremony, and is a player of the match award to be given to the player Nagesh. Over to you, Prashant. शुक्रिया हरीश जी। और फिलहाल मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाएगा। नागेश ने बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की, 18 गेंदों में 39 रन। पहले मैच में भी अच्छा प्रदर्शन था, दूसरे मैच में पहली गेंद पर शिकार बने थे, और इनके नाम पर एक अर्धशतक भी है। भिवंडी में बिग बैश में इन्होंने दमदार बल्लेबाजी की थी और शतक जड़ा था। उदय जी हमारे साथ। मिस्टर मंजा प्लीज आइए प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। सागिब प्रीमियर लीग 2024 आज का 4था दिन, और मैं बुलाना चाहूँगा खास करून मी या ठिकाणी नागेश वाडेकर आपण या। नागेश, अत्यंत महत्त्वाचा मैच है। आपण आप फिलहाल अगर देखें तो महाराष्ट्र से गोवा तक आए हैं। एक तरफ क्रिसमस का त्यौहार और दूसरी तरफ साके प्रीमियर लीग का सबसे बड़ा त्यौहार, और आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी पहले मैच में, शानदार बल्लेबाजी। इस मैच में तो एफर्टलेस बल्लेबाजी आपने की है। मैन ऑफ द मैच का अवार्ड आपको मिल रहा है, कैसा लग रहा है? एक टीम का सपोर्ट था, एक बॉलर लोग ने अच्छा किया, और बैटिंग में भी 4-5 जन थे हम लोग। पावर प्ले का बैटिंग अच्छा किया मैंने, और टूर्नामेंट तो बहुत फर्स्ट टाइम आया गोवा में मैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और ट्रैवल करके थोड़ा सेकंड मैच में बैटिंग नहीं हुआ, जल्दी से आउट हो गया, तो थैंक यू। जिस तरह से वो शतक आया था उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि 50 रन बनाना, शतक बनाना किसी भी खिलाड़ी का, किसी भी बल्लेबाज का सपना होता है। शतक आने के बाद आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान की तरफ चला गया। शतक, मेरे को कॉन्फिडेंस था कि 90 रन हो चुका है और 3 बॉल बाकी है कि मैं मार दूंगा, तो यही कॉन्फिडेंस रख के खेला कि मैं 100 रन मार दिया। हेलो मंजू मंजू मंजू
नागेश वाडेकर फिलहाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले मैच में भी बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन इनका था। भारत में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके गोवा में आए, पहली बार गोवा में आए और आपका बल्ला बोल रहा है, बहुत खुशी हो रही है। यस, बहुत खुशी हो रही है। और क्रिसमस भी था परसों, एक गोवा में टूर्नामेंट था और इन्जॉय था, सब जन ने इन्जॉय भी किया गोवा में। और मैं टीम के साथ आया, टीम में भी एक सपोर्ट था, सब एक मिल के खेल रहे, यही प्लान करके खेल रहे कि फिर कल आराम है, फिर परसों वही सबको बोल के एक सपोर्ट करके टीम खेल रहे हम लोग। आपका पसंदीदा स्ट्रोक कौन सा है? ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब ओवर स्ट्रोक आप खेलते हैं? मुझे कवर ड्राइव बहुत अच्छा लगता है, मेरा वो बेस्ट शॉट है मेरा। इंटरनेशनल में बहुत सारे अच्छे खिलाड़ी हैं, किसको फॉलो करते हैं? कौन सा ऐसा खिलाड़ी जो आपका आइडल खिलाड़ी है? इंटरनेशनल में मैं हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या नागेश के आइडल खिलाड़ी है, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड इनको दिया जाएगा। उदय जी नाइक हमारे साथ हैं तो उनके कर कमलों से ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी, मैदान के चारों ओर आज बल्लेबाजी की, स्क्वायर कट, पुल, हुक, एक बार फिर लॉब किया था बॉलर के सर के ऊपर से और बहुत ही दमदार बल्लेबाजी। नागेश वाडेकर जिस बात के लिए जाने जाते हैं, गेम चेंजर खिलाड़ी। और नागेश, हमारे पास खिलाड़ी बहुत है, हमें खिलाड़ी नहीं है, हमें गेम चेंजर खिलाड़ी चाहिए, तो आप बिल्कुल गेम चेंजर खिलाड़ी है। बहुत ही शानदार प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में आपने किया और नागेश वाडेकर चेहरे पर मुस्कुराहट है। उदय जी नाइक हमारे साथ, जिनके करकमल से खूबसूरत ट्रॉफी आपको प्रदान की गई और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड। तो आज के दिन में नागेश वाडेकर आप आए और सबके ऊपर चाहे, कॉंग्रॅच्युलेशन, वेल डन। टेनिस क्रिकेट डॉट इन वरती आपण 4 दिवसाचा खेळ पाहिला, उद्या 5वा दिवस आहे। उद्या देखील दिग्गज खेळाडू आणि नेहमीच आपण बघतो की प्रोफेशनल खेळाडू भारतातले या मंचावरती दाखल होणार आहेत, गोव्यामध्ये येणार आहेत। तर उद्या देखील आमच्याबरोबर तुम्ही निश्चितच या क्रिकेटच्या खेळाचा आनंद घेण्याकरता टेनिस क्रिकेट डॉट इन वरती आणि त्याचबरोबर या अतिशय सुंदर अशा गोव्याच्या सांगीमच्या मैदानावरती आवर्जून या खेळाचा आनंद घ्या। आज इथेच थांबूया प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये इतकंच। समालोचक प्रशांत, त्यानंतर हरीश, प्रसाद आणि अशोक यांच्या मी स्टुडिओमध्ये जातोय। उद्या भेटू पुन्हा एकदा 9 वाजता, तोपर्यंत नमस्कार।